So good noon, everyone, and welcome back to Data Structures Theory Session. We are continuing our second unit. We have already seen array. We discussed everything related to array, kind of revision also. We have seen few operations on array, address calculation part, applications of array, and so, right? And now we are about to discuss stacks. Stack definition, then operations, and then application. And we want to focus on understanding stack. Now, I know that in unit 1, you might have already discussed what is stack, what is queue, what is linked list, what is tree, what is graph, how it looks, just an overview. But now in this unit, we will discuss stack in depth. Also, we are going to implement stack. So we are going to build it. So we need to know what is stack, how it works, and how we can represent stack. We start with the very basic. Stack is nothing but group of homogeneous items. A group, because we have more than one data, but those data needs to be homogeneous. Kind of array, right? Kind of array. But not only a group, along with that, it has its own behavior. Stack has its own behavior. It's last in, first out. Your data, your homogeneous item, group of homogeneous items will behave like whoever comes last will be the first to be removed. Last to go in will be the first to go out. That's the behavior. Only then you can say it is a stack. Otherwise, it is nothing but array. Array or list can be anything. So, elements will be added or removed from the stack or to the stack from the top only. You can perform these operations on one place only, and that is going to be the top. Top always. Now, टॉप में वेरी, कभी आपका टॉप 2 पे होगा तो कभी 5 पे होगा, बट टॉप इज काइंड ऑफ वी आर गोइंग टू रिमेंबर वेयर इज माय टॉप राइट नाउ. So if we want to remember that thing, then we need extra variable to remember what is the current top. Okay, so every stack will have their own top variable or top pointer or something which is pointing to the topmost element. So an extra top you will require, right? So it is going to point the most recently added item, and that's always going to be the top of the stack, right? Few examples, as you can see in these images, a stack of pebbles, maybe a stack of donuts. Even when we have number of books arranged on the desk, we say it's a stack of books. Now this is a stack. Why it is a stack? Because you can put a new book on the top of your current set of books, or you take a book from the top. अगर आप बीच से कोई बुक निकालने जाओगे तो क्या होगा? Your stack will collapse. जो आपने बुक का एक बड़ा सा ये जो स्टैक बना के रखा है वो गिर जाएगा. सारी की सारी बुक्स बीच से अगर निकालने जाओगे then it is going to be collapsed. So we can never remove any element from in between. अगर कोई एलिमेंट या कोई भी आइटम रिमूव होगी तो वो टॉप से होगी. अगर नीचे की कोई भी आइटम आपको चाहिए तो पहले ऊपर की सारी आइटम्स रिमूव करो, one by one. Only then you'll have access to the bottommost element. That's how stack works, and that is what the behavior of stack is. तभी आप उसको stack बोल सकते हो, right? So how do we implement stack? अगर मुझे stack बनाना है तो क्या क्या चाहिए? The first thing,
One way to implement stack is to have a data structure, कुछ तो memory चाहिए होगी, where array we can use to store data. अगर एक से ज़्यादा element homogeneous items हमें अगर save करनी है तो then recently what we have seen array, we can take array. So let's consider array right now. We are going to create stack using array. Stack linked list से भी बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे. Right now we are going to consider array here. So we need one array which is used to store elements in the stack. So आप कुछ इस तरह से बोलोगे, fine, we need one array, और इस array को मैं vertical draw कर रहा हूँ. You can draw it horizontal or vertical, doesn't matter. And that array is going to have few elements inside. Now if this is array, then it is going to have index values 0, 1, 2, 3 and 4. Maximum size is 5. Right? Now if I say this is an array called data array, then I need one array, data array with some max size, and when we declare it, we need data type also. Let's call it integer. So we need array, we have declared it. Okay. One thing is over, where we can store our data inside this array. Now, along with that data, along with that memory, we want to manage top. Every stack will have its own top pointer. Look, I'm saying simple pointer, not a pointer variable. So a variable called top keeps the location of the topmost element in the stack. So इस array के साथ और एक मुझे top variable चाहिए. I need to declare that top also. Now in terms of array, if I just want to remember where is my topmost element, array में आपका element कहाँ है ये याद रखना है, तो आप क्या याद रखोगे? Array की index, correct. You are just going to remember the index value. तो ये top जो है वो और कुछ नहीं, एक integer variable रहेगा which is going to remember the index value. कौन सी index value? जहां पे आपका last element store हुआ है, the topmost element. So this top can point anywhere where your last value is. If your last value is 3 at index 2, तो top जो है वो 2 store करेगा. It is going to remember 2 inside. So what we have now, we have data array and we have a top variable. Combinedly, these two are going to give you a stack data structure. ये दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे with few operations, we can say it is a stack. So ये दोनों को मिला के stack बनेगा, then combinedly, let's go for structure. We combine those two in a single entity. So we say struct. Structure struct stack, then your structure members, and S is the variable, stack variable. Now it is a stack variable. So this is how you can declare a stack. If you want to use a stack, this is how you can have that data structure. Now data structure is not only the memory, it is memory plus operations. So still we need to define stack operations. We will see in a while. But इस तरह से आप stack बना सकते हो. Now what we will do, plus 1 point additionally, हम normal stack नहीं बनाएंगे. We are going to create a stack as abstract data type. We will create stack as an abstract data type. Abstract मतलब यूजर को पता नहीं होना चाहिए अंदर क्या है. Abstract.
and we will create as a stack as a data type. So अगर यूजर को वेरिएबल लेना है तो वो क्या करेगा, इस तरह से वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकना चाहिए. Now how is it possible? Now this is a variable and this is a data type. S is a variable, stack is a data type. So we can say this is just a variable declaration. Now, is stack a primitive data type? No, stack is not a primitive data type. It is non-primitive data type. It is a derived data type. Now we have to define it because even stack is not inbuilt data type. Primitive तो नहीं है, inbuilt भी नहीं है. Okay? अगर वो inbuilt नहीं है, then we have to define it. So to define a new data type in C program, you may go for typedef statement. Typedef, it's a keyword in C which is going to define a new data type, and the syntax is something like typedef, then you give your structure, and then you give it a name. आपको जो नाम देना है वो नाम दो, and semicolon. So that is the syntax. And when we give a structure, we are simply going to have our members. So this is how you will write your program. You are going to define stack as a data type. So later point of time, जब भी आपको stack का variable चाहिए, आप सिर्फ stack s लिखोगे. And then we'll go for other operations on stack, right? But this is a structure to create a stack. A structure which consists of two members, one data array and the other one is top. Now ठीक है, चलो मेमोरी तो ले लिया, लेकिन इसका बिहेवियर कैसे फिक्स करूं? अभी तो ये सिंपल एरे है, सिंपल वेरिएबल है. It's a simple variable data, a simple array data and a simple variable top. How do I manage last in first out behavior? वो कैसे करेंगे? So for that we have to define few operations on stack. Okay. So next step is to define those operations. Possible operations to be performed on stack. The first one, very basic, initialization part. जैसे ही आप नया मेमोरी लेते हो, कुछ ना कुछ तो इनिशियलाइज करोगे, गार्बेज वैल्यू नहीं देना है. Even we want our user to be aware that my stack is empty right now. अगर नया stack लिया तो वो खाली होना चाहिए. There must be some kind of indication, and for that we initialize our stack. Then अगर insert और delete operation आपको करना है, then specifically for stack it is called push and pop. Insert operation stack के लिए कहलाएगा push and delete operation will be called pop. Push item into the stack, pop item from the stack. So it's going to insert a new item on the top or delete an existing item from the top. Operation will be done at top always. हर बार ऑपरेशन टॉप पे ही होगा. दैट मीन्स वी हैव टू मैनेज टॉप ऑल्सो. जब भी मैं कुछ ऑपरेशन करता हूं तो मुझे टॉप मैनेज करना पड़ेगा. आई हैव टू अपडेट माई टॉप. अगर एक वैल्यू अंदर डाला है तो टॉप को अपडेट करेंगे. एग्जिस्टिंग वैल्यू डिलीट किया है तो भी टॉप को अपडेट करेंगे. And then I can check whether my stack is empty or whether my stack is full. I can also go for display operation. I can go for change operation. I can just go and check what is on the top.
ना तो इंसर्ट करना है ना तो डिलीट करना है. I just want to check what is on the top. It is called pip operation. Push, pop, peep, change, display, is empty, is full, init. टोटल इतने ऑपरेशंस आप डिफाइन कर सकते हो स्टैक पे. अगर आप डेवलप कर रहे हो आपका स्टैक, तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू डिफाइन योर स्टैक एज अ डेटा टाइप. देन यू आर गोइंग टू राइट ऑल दीज फंक्शंस. इनिट का फंक्शन लिख दो, पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले, इज एम्प्टी, इज फुल, ये सारे फंक्शन लिख दो एक फाइल के अंदर. आपका फाइल रेडी हो गया. अब ये फाइल आप पब्लिश कर दो, जिसको चाहिए वो यूज करे. राइट? जिसको चाहिए वो मेरा स्टैक यूज कर ले. आपने पब्लिश कर दिया, उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन दे दिया हाउ टू कॉल दीज फंक्शंस. क्योंकि एक नया फंक्शन है तो फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होंगे, रिटर्न टाइप क्या होगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा. हाउ डू यू नो हाउ printf एंड scanf वर्क्स? बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. बुक में पढ़ते हो या तो फिर डॉक्स एक्सेस करते हो, कोई सिखाता है आपको, बट समवन नोज दैट. सो आप जब अपना स्टैक पब्लिश करते हो तो साथ में शायद आप डॉक्यूमेंटेशन भी दे दो. अच्छा, पुश करना है तो आपको दो पैरामीटर देने होंगे, पहला स्टैक वेरिएबल, दूसरी वैल्यू. सिमिलरली अगर पॉप करना है, आपका स्टैक वेरिएबल पैरामीटर की तरह आना चाहिए, एंड पॉप फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न वन वैल्यू. तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी दे सकते हो. बट फाइन, यू हैव क्रिएटेड योर स्टैक. एक फाइल बनाया आपने, एंड यू कैन गिव दैट फाइल टू एनीवन. एंड यूजर इज जस्ट गोइंग टू इंक्लूड योर फाइल एंड स्टार्ट यूजिंग इट. जिस तरह से आप stdio.h इंक्लूड करते हो, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग देयर फंक्शंस, printf, scanf. You include stdlib.h फाइल और आप उसके फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हो. राइट? Maybe in Turbo C you include string.h file and then you start using their functions, strlen, strcpy, strcmp and so. तो सेम यहाँ पे क्या रहेगा? You include this stack file and then start using its functions, init, push, pop, peep, change, display and so on. तो कुछ इस तरह से करना है. Now when we do this process, हमने एक तो डेटा टाइप डिफाइन किया, और वो डेटा टाइप एक अलग से फाइल के अंदर है. मान लो कि वो हेडर फाइल है, तो आपने क्या किया? यू हैव क्रिएटेड stack.h फाइल. मान लो इस तरह से यू हैव क्रिएटेड stack.h फाइल. जब एंड यूजर वो फाइल को इंक्लूड करेगा तो वो कभी खोल के नहीं देख रहा है. हैव यू सीन व्हाट इज देयर इनसाइड stdio.h? कभी देखा आपने? string.h के अंदर क्या है, कभी देखा आपने? All those processes are abstract for you. printf कैसे इंप्लीमेंट किया आपको नहीं पता है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर यू. सो सेम वे आप जो स्टैक बना के दोगे वो एंड यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, वो खोल के नहीं देखने वाला कि अंदर क्या है. इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक. abstract stack. So we will implement it and at that time it will be more clear. But abhi ke liye aap kya dekhoge? In your program you are going to define all these things in a separate file. Definition से लेके सारे functions आप एक अलग फाइल में रखोगे. उस फाइल को आप अपने demonstration program में include करोगे, and then you start using those functions. Fine. Maybe most of the students here in TC3 class are D2D students. Diploma students have already implemented stack, but might be the case they have implemented entire stack and its demo in a single file. एक ही फाइल में आपने स्टैक बनाया, उसके फंक्शन बनाए और उसी के फंक्शंस कॉल किए, सब कुछ एक फाइल में आ गया. But here this time we are going to do it in a different way.
will be having two files. एक demonstration file बनेगा और दूसरा stack का file बनेगा. One will be C file तो other will be header file. कुछ इस तरह से समझ लो. C file is just to demonstrate भाई stack कैसे काम करता है ये दिखाऊंगा. I will test my stack. Okay? But जो header file है वो that contains only the stack code. स्टैक को डिफाइन करने का कोड, स्टैक के ऑपरेशन डिफाइन करने का कोड उसके अंदर रहेगा. जब किसी को आप स्टैक देना चाहते हो तो वो एक ही फाइल दोगे उसको. नो एक्स्ट्रा कोड देयर. वेल, सो वी डिस्कस हाउ स्टैक लुक्स and what are the stack operations. Let us take these operations one by one now and try to define what it performs. भाई push क्या perform करेगा, pop क्या perform करेगा, कैसे करेगा, and then we will go for algorithm of all these operations. So we start with the first one, very basic one, initialization. What is stack? Your stack is nothing but an array. We call it, let's say, data array. It is having some elements. Depending on maximum size, it will have some index values. And along with that, you have a top variable. Now, when you define or when you take a variable of stack, it is a structure. And we never assign values to the structure members at the time of defining structure. जब structure define करते हो तो उसके member को आप कोई value assign नहीं कर पाते. Value कब assign कर पाओगे? जब एक variable ले लोगे उसके बाद. So once we have a stack variable, we want to initialize it. अब data array और top, data array के elements है, element कुछ भी हो सकता है, doesn't matter. What I need to remember, अगर सबसे पहली बार मैं कोई स्टैक नया स्टैक बना रहा हूं, that means it doesn't contain any data, and I can indicate that part using top, because what is top? Not first member, last member of the stack, topmost member of the stack. So what is top? It is the topmost, where your topmost element is, उसकी position देगा आपको. अगर आपने एक भी element अंदर नहीं डाला है तो top कहाँ जाएगा? It cannot be 0 because 0 is the index value. Inside the array, 0 is some index value. अगर मैं टॉप को 0 बनाता हूं तो वो टॉप यहां पे पॉइंट करेगा, एंड इट मीन्स भाई एक वैल्यू होना चाहिए यहां पे. We don't have any value here. That's why what we do is we assign top equals to -1. Anything that is negative, which is not possible in terms of index. Index कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो जब कभी भी टॉप नेगेटिव है इसका मतलब ये हो गया कि स्टैक खाली है. That's what the initialization part is. So we just need to assign top equals to -1. और ये हो गया आपका initialization process. Forget about any garbage value inside your array. It doesn't matter. Because whenever we want to perform any operation, we will always check top. हम हर बार टॉप से आगे बढ़ेंगे. अगर टॉप -1 है तो मेरा स्टैक खाली है. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल. आई डोंट थिंक कि उसका कोई एल्गोरिदम या प्रोसेस लिखना चाहिए. एक ही स्टेप है, असाइन टॉप इक्वल्स टू -1. हाउ? हाँ, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा बिकॉज टॉप is not a normal variable, it is member of stack structure. तो structure का member आपको कैसे मिलेगा?
अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो s डॉट टॉप, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो एरो ऑपरेटर. ओके, दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस टॉप. अगर नॉर्मल वेरिएबल है स्टैक का तो s डॉट ऑपरेटर, और अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो s एंड देन एरो ऑपरेटर. इवन इफ यू वांट टू एक्सेस डेटा तो वो भी इसी तरह से होगा, s डॉट डेटा या तो फिर s एरो डेटा. Well, so very simple. S points to data equals to -1 and you are done with initialization process. Let us think about push operation now. What if I want to insert a new value inside my stack? अब मैं array नहीं बोलूँगा, मैं stack बोलूँगा. Okay, I want to insert a new value inside my stack. So for the first time, when we take stack, we have a data array and we have a set of elements inside. Indexes are something like this. Deliberately I keep top part open just to show you everything will be done from the top. And what is that top? We handle that top with separate top variable which is equals to -1 right now. So this indicates currently my stack is empty. मेरा stack खाली है. Well, Dharam is asking, index value is 0. Then top is pointing is going to -1. Why is it not going to 1? Look, Dharam, this is just initialization. मैं start -1 से करूँगा. Yes, we are going to increase our top when we insert something. जब हम insert करेंगे तो हमारा top increase होगा. Otherwise, it will be start from -1 and it will remain wherever it is. Okay? Yeah, so this is the current status. मान लो कि अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, that's your empty stack, and you go for the first time push and something value. Let's say you go for push 5. Look, when we discuss something, हमारे पास एक ही स्टैक है, हम ये मानेंगे और हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू देंगे. लेकिन प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा स्टैक हो सकते हैं. तो जब प्रोग्राम लिखोगे तो उसके अंदर आप क्या करोगे? पुश, साथ में आपको स्टैक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू पास अ वैल्यू. सो प्रोग्राम में जब फंक्शन लिखोगे तो 2 पैरामीटर, अभी समझने के लिए सिर्फ एक वैल्यू. ओके, yeah, on, that's correct. -1 is just indication that stack is empty. Okay, so is this clear? प्रोग्राम के अंदर जब आप फंक्शन लिखोगे तो 2 पैरामीटर दिखेंगे, लेकिन जब हम ये ऑपरेशन समझ रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 वैल्यू. ओके, सो आई वांट टू पुश 5 इन द गिवन स्टैक. अगर आपका स्टैक खाली है तो सबसे पहली वैल्यू कहां पे जाएगी? 0th index पे. Correct? Your first value must go in the 0th index place. So inside your array, 0th index पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए. That's your data array. That's your data array. But what we say, what push operation says, you can perform any operation at a top पे ही ऑपरेशन कर सकते हो. What is your top right now? -1 इंडेक्स नहीं है, वहां पे मैं कुछ स्टोर नहीं कर पाऊंगा. तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू अपडेट माई टॉप. पहले मुझे टॉप को अपडेट करना पड़ेगा.
-1 से 0 पे लाना पड़ेगा उसको. So the first step we do is top plus plus. एक बार टॉप 0 पे आ जाए, then you can access your data array. Inside that array you use your top as an index and you assign your given value. Okay, now top, data, all these are members. तो आप क्या करोगे? मेंबर्स कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल. अगर वो पॉइंटर वेरिएबल है देन s पॉइंट्स टू टॉप, s पॉइंट्स टू डेटा. नॉर्मल वेरिएबल है तो s डॉट टॉप, s डॉट डेटा. राइट. अगर आपने स्टैक वेरिएबल ग्लोबल लिया है तो पास करने की जरूरत नहीं. अगर पास नहीं करते हो, ग्लोबल वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, तो s डॉट चलेगा. But when you pass your stack variable as a parameter, फंक्शन में अगर आप स्टैक पास करते हो, नॉर्मल पास किया, देन इट विल बिकम कॉल बाय वैल्यू. नॉर्मल अगर स्टैक या कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने पास किया एज अ पैरामीटर, तो वो हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू में कॉपी जनरेट होगा. फंक्शन के अंदर जो कुछ ऑपरेशन करते हो कॉपी पे बनेगा. When you come back, nothing is there. Right? So, inside a program, when we pass our structure variable or a stack variable, हम call by value से नहीं, call by reference से जाएंगे. So, we will pass address of our stack. Address pass किया तो pointer variable. और अगर pointer variable है तो आपको arrow operator use करना है. That's why I am writing s arrow top, s arrow data. Okay, so keep this in your mind now. Now and onwards, I'm going to write s points to top, s points to data. That indicates s is a pointer variable. Why? Because it is a parameter to the function. So this is how we perform operation. Now, every time you call push, आपको टॉप इंक्रीज करना है, डेटा स्टोर करना है. टॉप इंक्रीज, डेटा स्टोर. सो मान लो कि आपने पहले 5 स्टोर किया, देन यू स्टोर 3, देन यू स्टोर 9, देन यू स्टोर 2 एंड देन यू स्टोर 1. दिस इज योर डेटा एरे which is having a fixed size, maximum size. Correct? So at that time, your top will be pointing to the maximum index value. And that is the indication of stack overflow. मतलब stack full हो गया. My stack is full and I cannot insert more value inside this stack. And that needs to be checked before we assign any value. आप कोई भी वैल्यू स्टैक के अंदर डालते हो, उससे पहले आपको ये चेक करना होगा, do I have enough space there? Right? So how do we check it? A simple if condition. If your top, right, s arrow top, if your top is equals to अल्गोरिदम के लिए मैक्स, प्रोग्राम के लिए -1. अल्गोरिदम के लिए मैक्स, क्योंकि अल्गोरिदम इंडेक्स नहीं देखता, वो साइज देखेगा. प्रोग्राम के लिए -1 बिकॉज इनसाइड अ प्रोग्राम we think top is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So when you write your program, it is going to be max -1. अगर अल्गोरिदम लिख रहे हो तो सिर्फ मैक्स लिख लो, चलेगा. So this is the condition to check whether our stack is full or not.
अगर ये कंडीशन ट्रू है, स्टैक ओवरफ्लो. ओके, एंड यू सिंपली रिटर्न. आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाओगे, यू रिटर्न फ्रॉम द पुश फंक्शन. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप टॉप प्लस प्लस करोगे, एंड आफ्टर दैट एट द टॉप मोस्ट प्लेस you will assign a new value. Now this is the entire flow of push operation. अब इसको अच्छे से अरेंज करते हैं. पहले इफ कंडीशन, देन टॉप प्लस प्लस. Then when you go and write your function, that function is going to add a new item. The prerequisite, precondition is what? It must be, stack must be initialized and it must not be full. तभी आप insert कर पाओगे. And the post condition will be what? A new item will be added at the top. अगर इसको हम कुछ algorithm के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, then we should have mnemonics. Stack का variable क्या होगा, top क्या होगा, what is the maximum size. So in this procedure, insert procedure, let us assume a new element x we want to insert. X is going to be inserted where? Top of the stack. Now what is that stack? That stack is represented by vector s. So s is your stack, which can have maximum n elements or currently n elements. Okay, containing n elements. And the top pointer for this vector stack s is top. It is nothing but जब आप mathematical equation लिखते हो तो नीचे आप क्या करते हो? Where this is this, this is this, this is this and so on. जब आप फंक्शन लिखते हो तो आप where करके हर एक टर्म को डिफाइन करोगे. This is the same thing. अगर मैं algorithm लिखता हूं तो मैं डिफाइन करूंगा कि algorithm में x क्या है, s क्या है, top क्या है, n क्या है and so on. So x is the new element, s is your stack, top is top pointer and n is the maximum number of elements inside, maximum number of elements inside your stack at this point of time. Not possible. Possible is the size. Well, this is your algorithm for push operation. सबसे पहला step, we are going to check whether stack is full or not. Overflow condition. And what is that condition? If your top is max, तो वो full है. Algorithm में max, program में max -1. Well, if you find this funny, let it be. But I'm pretty much sure funny incidents you are going to remember along. And that's why I'm making it funny. Okay, so s points to top is max, then it is overflow and we are simply going to return from this process. If it is not full, then we go further, we increase our top by 1. After that, wherever your top is pointing to, inside your vector s, now यहाँ पे मैं data नहीं लिखूंगा because I have already said s is a vector. So s of s points to top equals to new element x, and my process is over, I will return. तो ये हो गया algorithm for push operation. Okay. What is the process? If condition for overflow, else लिखो या तो फिर if के अंदर return करो, depends on you. अगर आप else लिखते हो तो else के अंदर आप top plus plus करोगे and then data of top is equals to value. Now this is your process. That's it. This is the push operation. एक छोटा सा फंक्शन बनेगा आपके प्रोग्राम के अंदर. जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे, given value will be stored on the topmost place, right?
Any query in this push operation? Any query in this push operation? Great, fine, thank you. So let's continue and have a look at pop operation also. Before we conclude this session, let us have one more operation, pop. Now, if you want to do pop operation, then what it says, it is going to delete or it is going to give you the value from top of the stack. Top में जो है वही मिलेगा, बीच में से या नीचे से कुछ नहीं. So let us assume that inside your stack array data, you have a set of values already stored. And if this is the current condition of your stack, then your top will be pointing to index 2. It indicates where your topmost element is. So this is your current status of the stack. And if I say I want to pop something, then it is going to give me the value from top. Wherever your top is pointing to, that is going to be your index. Take the value. Okay, take the value. So VAL equals to data of top. It is actually going to be S points to data, S points to top. Right? So that's how you get that value. So that at the end, you will be able to return that value. जो value stack के अंदर से आपको मिला है, वो वापस भेज दो. But before you return, आपने एक value निकाल दी है, तो आपका top decrease होना चाहिए. It should be updated. So your top must be decreased here. Now that's going to be the process of pop. एक एक करके सारी वैल्यू पॉप कर ली, देन अगर मैं एक एक करके हर एक वैल्यू को निकाल देता हूं तो टॉप कहां पे रहेगा? -1. When top is -1, it indicates my stack is empty. तो आप पॉप प्रोसेस नहीं करोगे. And that becomes your underflow condition. If your top is -1, then stack underflow. It is the underflow condition. अगर stack underflow हो गया है तो आप you are going to do nothing, आप सिंपल रिटर्न हो जाओगे. अगर खाली नहीं है तो एक वैल्यू मिलेगा, वैल्यू निकालो, टॉप डिक्रीज करो, रिटर्न दैट वैल्यू. So what is pop operation? Well, pop operation is going to remove the topmost item from the stack. The precondition is what? It must be initialized and it must not be empty. वो खाली नहीं होना चाहिए. अगर वो खाली नहीं है, then the post condition will be what? It is going to return the topmost element. Top element will be removed. Right? And your function is going to return that topmost element value. Return होना चाहिए, remember. सिर्फ print कर दोगे तो नहीं चलेगा. It should return a value. Well, just like previous, vector S is your stack. Top is pointing to the topmost element, and whatever value you receive, you are going to return. So the algorithm is very simple. You start with checking whether your stack is empty or not. Underflow condition. अब algorithm को थोड़ी पता है कि index 0, 1, 2 या -1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए. Algorithm is a generalized process. तो algorithm के केस में आप क्या बोलोगे? If your top is null, then it is empty. In terms of algorithm, you say top is null. In terms of C program,
we say top is -1. Then your stack is empty and you return. Otherwise, first step, you receive a value. Second step, you decrease your top. And then you return a value. Remember, push operation and pop operation. These two are reverse to each other. पुश के अंदर आपने पहले टॉप प्लस प्लस किया एंड देन यू स्टोर वैल्यू एट टॉप, राइट? इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा. पहले आप वैल्यू निकालोगे फ्रॉम योर टॉप in pop operation and then you are going to decrease your top. Exactly reverse. So you should remember this thing. Statements भी reverse होते हैं, ऑपरेशन भी रिवर्स होगा. स्टोर करना या डिलीट करना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना. So this is what push and pop operation is. Okay, any query in pop? Any question? Okay, thank you. Who was that? Leave the class. Leave the class. Well, Devansh is asking, sir, do we have to make any book or any practical file for theory portion? No, nothing for theory portion. I'll never ask you to submit your classwork book or anything. You can make your notes if required. अगर आपको चाहिए आप अपने notes बना सकते हो. But there will be nothing like classwork book or classwork practice. For your teaching scheme, as you all know, you have to create or you have to implement your programs. You have to write those programs, submit it to your lab faculty. That will be your submission part. Okay? Yeah, okay. Now, before we end, a small point. PIP operation. Because pop and PIP both are same with a minor difference. पॉप से आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट मिलता है, साथ में वो डिलीट भी होता है. पिप के अंदर क्या होगा, आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट तो मिलेगा लेकिन वो डिलीट नहीं होगा. ओनली दैट चेंज. Now what do we do to delete that element inside pop? हमने pop function में delete करने के लिए क्या किया? Yes, we decrease our top. This is the statement which defines that element has been deleted. अगर ये आप नहीं लिखते हो तो pop बन गया pip. Then pop operation will become pip operation. That's it. That's the only change. ये पूरे algorithm या program में से एक line निकाल दो तो आपका बन जाएगा pip operation. Very quickly, if I do it here, so if we do have already some values, inside your data array, then it is just going to read the value. Pip operation will read the value. From where? From top of the stack. It will not remove it. तो इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है. From your data array, read the topmost value and then simply return. Now before you read, you can always check whether your stack is empty or not. Right? Read करने से पहले ये तो हम हर बार चेक करेंगे खाली है या नहीं. So the algorithm will be saying, if your top is null, it is underflow. Otherwise, we will read the topmost value and we directly return it. Return the topmost value.
and that is your pip operation. We'll stop here. So what we have covered today, we started with stack. What is stack? Stack is nothing but a collection of homogeneous items which follows last in first out behavior. How we can have stack? So to have a stack, we need one array and we need one top variable which maintains the position of topmost element. Combinedly these two creates a stack. तो हमने उसको structure में डाल दिया. उसको एक नया डेटा टाइप बनाना था तो टाइप डेफ करके नया डेटा टाइप डिफाइन कर दिया. नाउ वी हैव अ मेमोरी स्पेस, वी हैव अ डेटा स्ट्रक्चर. उसका बिहेवियर डिफाइन करने के लिए हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए. इनिट, पुश, पॉप, पीप, चेंज, डिस्प्ले, इज एम्प्टी, इज फुल, दीज आर द फंक्शंस. इनिट, टॉप को -1 करो. पुश, अगर फुल नहीं है आपका स्टैक, then you increase your top and save the data. Just reverse, pop करने के लिए अगर वो खाली नहीं है, then you take a value and decrease your top. If you do not decrease your top, then it becomes pip. We'll stop here. Upcoming operations we will cover in the next lecture. So thank you online students, thank you for being part of this session, and see you in the next one. You may leave.